How do you see the market in Canada? Is this a good time to move to Canada? You are coming with the mindset कि यार मेरी यहाँ डायरेक्टर लेवल जॉब है और मुझे डायरेक्टर लेवल जॉब ये ऐसी जॉब मिल जाएगी वहाँ ऐसा नहीं होगा. You'll have to really start from scratch. I think for a family of 4 you need $60,000 Canadian before you land. Industry wise, Canada की industry is around government sector. Government sector बहुत big है because they have social security set up. The second is oil because it's an oil-rich company. Third is telecom, and the last one is banking. You will have to find combination of complementary skills ताकि you can stand out as someone unique. Job market is tough because it is competitive. Another aspect is point-based system. What's the criteria from their perspective? तो कुछ तो है जो points है ना कि अगर आपके पास है तो अच्छा है, नहीं है तो ठीक है. बट कुछ है कि ये तो होना ही होना है, मतलब ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है. आई थिंक स्टीव जॉब्स ने कभी कहा था, आई डोंट वांट टू बी बेटर देन अदर्स, आई जस्ट वांट टू बी डिफरेंट. Hello everybody, how is everything going? I hope all is well. मेरे साथ बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है बहरोज. ही इज जॉइनिंग अस फ्रॉम यूएस एंड आई थॉट यार हम लोग फेस टू फेस तो गपशप लगाते रहते हैं बहुत सारे दोस्तों के साथ, बट इट्स गुड टू meet people from diverse backgrounds with very different experiences, even in different countries, and get to learn from them. So podcast is a tool to utilize that. And through a common friend, Wali, who's based out of Dubai, I got in touch with Bahroz. And Bahroz has got a quite interesting background. He moved from Dubai to Canada and then onward to US. He works in one of my son's favorite companies, Lego. So we'll get to that as well. But I think I would like to learn, and I want our audience, viewers, to learn कि अगर आपने पाकिस्तान से move करना चाह रहे हैं, so we'll get to learn about Bahroz. How did he make the transitions himself? And secondly, उनके experiences से हमारे viewers कैसे फायदा उठा सकते हैं, and how they can move to these countries. Bahroz also talks a lot about job opportunities on his channel as well. I'll give a link at the bottom. So we'll get to know more about that as well from Bahroz कि किसने job लेनी हो तो immigration is not enough. You have to have a livelihood source as well. So in those countries, how are you going to survive? So अस्सलाम वालेकुम Bahroz, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली, थैंक्स फॉर द इंट्रोडक्शन एंड थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. मैं यही लोगों को कहता हूँ कि गेटिंग एक्टिव ऑन सोशल मीडिया जस्ट ओपन सो मच अपॉर्चुनिटीज. लाइक आपसे दिस इज हाउ आई वाज एबल टू कनेक्ट, हाउ वी वर एबल टू कनेक्ट विद द कॉमन फ्रेंड वली एज वेल. सो थैंक यू फॉर दिस. यू टॉक्ड अबाउट लेगो एंड योर सन. मैं अपना जब मेरे पास पहला लेगो सेट आया था, एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज जब भी मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ जस्ट मूव्स टू लेगो फर्स्ट. रादर होता ये है कि लोगों को जब मैं बताता हूँ कि मैं लेगो में काम करता हूँ बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, और फिर मैं उनको बताता हूँ मैं फाइनेंस में काम करता हूँ तो उनका दिल टूट जाता है. कहते हैं यार, क्योंकि उनको लगता है शायद मैं कोई बिल्डर हूँ, मैं खिलौनों से खेलता हूँ, बट मैं वही एक्सेल पे डेबिट क्रेडिट ही कर रहा होता हूँ. Right. सो मेरे फादर ने मेरे लिए कोई लेगो सेट मंगवाया था इन पाकिस्तान, एंड आई रिमेंबर आई लॉस्ट वन ब्रिक. Okay. और उनको इतना दुख हुआ क्योंकि वो महंगा भी था, देयर वाज सो मच वी कुड अफोर्ड. तो Right. उन्होंने सारे सेट को जो है वो बना के एल्फी लगा दी Oh wow. कि बस अब इससे जो घर बन गया उसी से खेलना है. Wow. एंड आई रियलाइज कमिंग इन द कंपनी दैट द आइडिया ऑफ प्लेइंग विद लेगो इज दैट यू ब्रेक इट एंड यू मेक इट अगेन. और मैंने कहा यार, मेरे फादर ने जो मेरे लिए एक लेगो सेट लिया था उसमें भी मेरी वो ब्रेकिंग एंड मेकिंग इट की खुशी जो है वो छीन ली. Indeed. But thank you for the opportunity, and allow me to just introduce myself. I'm originally from Quetta. मेरी पैदाइश वहाँ की है, मेरी पढ़ाई वहाँ की है. उसके बाद जो है I moved to for university. I moved to Islamabad. वहाँ मैंने नस से जो है bachelor's किया, master's किया, and then came opportunity with Procter and Gamble. Okay. Which was a big break for me. So I started with Procter and Gamble in Karachi. So Karachi में 5 साल. That is where I got married as well in Karachi. और फिर the company moved us to Dubai. अच्छा, इस दौरान I was very much corporate guy, still a corporate guy, but I was very much slave to corporates and organization and 9 to 5 setup, and I thought this is life, this is how it will be. And P&G is a great career, great company, and the way they plan your career, आपको कुछ सोचने का मौका भी नहीं देते कि यार आप कुछ और सोचें अपनी लाइफ के बारे में. Everything is like kind of designed for you. So anyways, the opportunity came to move to Dubai. Indeed. और दुबई मूव कर गए with Procter and Gamble. There I was for 7 years. I lived 7 years. But उस दौरान हुआ ये कि what I started to realize is that eventually this will end. Like either my career or tenure with P&G will end, or they will move me further. और मसला है कि मैं जिस रीजन में P&G के काम करता था, that was called IMEA region, India, Middle East, Africa, Pakistan. So
they would probably be moving me within the region. There could be a small chance here and there, and people do get lucky getting an assignment in Europe or US or North America, but that was quite much of a risk which I didn't want to take. And the reason I call it a risk because I decided that I don't want to go back to Pakistan and settle and raise my family in Pakistan. Now, nothing against Pakistan, as in I'm a Pakistani. I've lived in Pakistan. I still have family there. बट आई रियलाइज कि मेरे बच्चों को जो है वो द वे दे बीन ब्रॉट अप बिकॉज मेरे दोनों बच्चे दे वर बोर्न इन दुबई माय डॉटर शी इज 11 नाउ माय सन इज 8 उनको फॉर इंस्टेंस ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर वो बटन दबाएंगे वॉल पे तो बत्ती ऑन नहीं होगी हमारा तो ये ऑप्शन है ना आपने बटन दबाया हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है उनको ये चीज समझ नहीं आती अगर वो बटन दबाएं और बत्ती ऑन नहीं हो तो दे कांट जस्ट दे कैन नॉट कैलकुलेट कि हुआ क्या है दिस इज जस्ट वन एग्जांपल और मैं थोड़ा सा मजाक में भी कह रहा हूँ बट व्हाट आई मीन टू से इज और मैं उम्र लोगों को ये भी कहता हूँ कि यार पाकिस्तान के बच्चे बहुत तेज होते हैं मतलब व्हेनेवर आई विजिट पाकिस्तान विद माय किड्स व्हिच इज नॉट अ लॉट क्योंकि नॉर्थ अमेरिका से फ्लाइट वगैरह काफी लंबी है बट आई रियलाइज कि माय किड्स आर वेरी दे आर एकेडमिकली स्ट्रांग दे आर critically strong but they're not street smart जिस तरह पाकिस्तान के बच्चे होते हैं street smart and just that's just because the environment you get in Pakistan right and I for instance मेरे बच्चे जो हैं they just go to the park next door without our surveillance वहाँ पार्क में खेलते हैं नजदीक जो घर के neighborhood के पार्क है nice neighborhood and they come back पाकिस्तान में I cannot do this और जब वो मेरे बच्चे आते भी हैं पाकिस्तान एंड दे आस्क मी कि हमने पार्क जाना है ऐसे नो यू कांट जस्ट गो टू द पार्क लाइक दिस बल्कि इवन मेरी सर्वेलेंस में भी पार्क जाना जो है वो एक चैलेंज है so all of this was we decided that it won't be fair for us to bring them back into that life या तो हम अभी चले जाएं like they're still young and we just go back and settle there but after like you've lived outside for 10-15 years and then we say चलो अब वापस पाकिस्तान चलो और settle हो जहाँ they can't assimilate anymore so we decided this would be not fair for them and so I thought I need to look for a place which I can call home. क्योंकि दुबई को you can't call home. दुबई में you're not permanent. You have to leave Dubai when your job is over. And that's when we started to work on our Canadian immigration. अच्छा उससे पहले भी मैंने Canadian immigration पे काम करना शुरू किया था, but that was just out of के यार इक्का दुक्का किसी दोस्त ने किया है तो fear of missing out के चक्कर में किसी ने फॉर्म भर दिया तो मैंने कहा हम भी फॉर्म भर देते हैं. But I never pursued it. I never submitted the form. And it was only in Dubai that we started working on it. अच्छा उसमें भी मेरे पास दो options थी. Primarily लोगों के पास दो options होती हैं ऑस्ट्रेलिया कनाडा इसलिए क्योंकि उनकी immigration they're very immigration friendly countries. उनकी इकोनॉमी इमिग्रेशन पे बहुत चलती है एंड दे वांट देम टू कम बट उसका ऑस्ट्रेलिया में चैलेंज ये था और व्हाट आई डिसाइडेड वाज या लोगों को मैं रेकमेंड भी ये करता हूँ कि देयर आर टू थिंग्स यू नीड टू मेक अ डिसीजन ऑन वन इज सोशल सर्कल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बेशक आप दुनिया में कहीं चले जाएं लेकिन अगर आप वहां दोस्त नहीं बना सकते वहां फैमिली नहीं है एट द एंड यू विल स्ट्रगल और दूसरा है इकोनॉमिक्स विच इज यू नीड टू मेक मनी एज वेल तो पहले आप ये देखिए कि आपके फ्रेंड्स फैमिली कहाँ है अगर आपके फ्रेंड्स फैमिली आर इन ऑस्ट्रेलिया मोर देन दैट गिव इट अ प्लस लाइक दैट शुड बी वन ऑफ योर प्रेफरेंस दूसरी आपने देखनी है कि पैसे कहाँ बनते हैं अच्छा मेरे लिए दोनों मुल्कों में पैसे जो हैं वो बहुत ज्यादा नहीं बनते टैक्सेस आर हाई सैलरी लेवल्स आर लो बट कनाडा का फायदा ये है एज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज आइसोलेटेड मतलब ऑस्ट्रेलिया एक अलग दुनिया है जबकि कनाडा इज अटैच टू यूएस सो उसका फायदा ये होता है कि यू हैव एक्सेस टू वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी and this is what I did as well. After spending my 5 years in Canada, after getting my citizenship and all, I moved to US because of the career opportunities and the economical opportunities in US. And this is the access that people can get. So जब लोग सोच रहे हो कि यार कौन सी चूज करना चाहिए, this could be one yardstick to make use of. And then yes, we just decided to make our move to Canada. That's quite fascinating. So, how many years did you spend in Canada, and what then provoked you to make the other move, which is moving to US? So, let's talk about Canada first. So, when did you reach Canada? So I moved to Canada in 2017. हमने Okay. फेडरल स्किल्ड लेबर के थ्रू अप्लाई किया था. Okay. Back then it was a physical document that I had to fill and I had to submit and all. Okay. So 2017 में हमने लैंडिंग की थी. It took me my family moved there in Jan. All right. It took me 6 months to move. I did some back and forth क्योंकि नौकरी चल रही थी. Okay. It was difficult for me to just leave. So, what? And I wanted to settle the family first. Great. And then I made the move somewhere in June. So, what did you do when you reached over there? Did you immediately start a job, or how long did you take to do something over there? No, yeah. So I didn't get it. So I resigned. Usually, people what they do, which is the smart thing to do, is you look for a job and then you resign.
somehow I didn't plan it well because I never thought I will move to Canada. I always thought I will be with PNG, have a career with them, and do back and forth. But I just realized it just doesn't work. I was living in kind of a la la land, trying to manage both, unless I find a job in Canada. Otherwise, I won't be able to keep a job in Middle East and do back and forth. And I didn't want to be one of those people who stay away from their family. And just one point on that as well. There are many people जो कि करते हैं ये कि वो अपनी फैमिली को सेटल कर देते हैं, खुद मिडल ईस्ट में होते हैं, अच्छी इनकम कमा रहे होते हैं, सो दे कैन फ्लाई बैक एंड फोर्थ एज वेल, probably twice, thrice a year, and they can afford to keep their family and maintain two houses. They can do that. और मैंने भी सोचा था कि शायद मैं भी कुछ ऐसे ही करूंगा। और बल्कि आई यूज्ड टू फील सॉरी फॉर द किड्स एंड फैमिली कि यार देखो बेचारे अकेले रहेंगे, बट होता ये कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज दे आर थ्री, मेरी वाइफ एंड माई बच्चे, there are three of them. They enjoy. They're together. They found a life within Jan, Feb, March. जब मैं वहाँ नहीं था उनके पास, उन्होंने अपनी लाइफ बना ली वहाँ. What I realized was I was alone. ना मेरा कोई दोस्त मुझे like entertain करता था because they were already engaged as well. Because I'm at an age जहाँ सबके family हैं. So on weekends I would be alone. So I started to realize that I was more miserable than my family. So for people who are deciding कि यार हम split कर लेते हैं, रिमेंबर इट्स नॉट फॉर फैमिली के लिए बहुत आसान होगा, रिलेटिवली आसान होगा, बहुत आसान नहीं है, रिलेटिवली आसान होगा, दिल मैनेज. What was hard on me. So I don't recommend doing that. It didn't work out for me, and hence I decided to resign, move there, and then I started looking from scratch. It was tough. 1 or 2 months that it took me to get my first job. But what I did was is to एक तो मैंने networking के through job किया, and I can speak to that piece. But one thing that is very important is when you move to Canada or when you immigrate, you have to throw your ego out. या आप अपनी ego जो है वो पाकिस्तान या दुबई छोड़ कर आए. For instance, मेरा जो आखिरी role था PNG में, there was a CFO for PNG Pakistan, which was for me like a very high level ideal role, and I was really some a role that I looked forward to. Like मैंने कहा अगर ये role मुझे मिल जाए तो मेरी मतलब that would be the end of my or the happiness or peak of my career, not end. And I resigned from that and I started a very entry level accounting job in Canada. And the point is you need to throw your ego out. अगर आप वही ego है कि यार मैं CFO था, मैं GM था, मैं CEO था या मैं डायरेक्टर था, सीनियर डायरेक्टर था और मुझे उस तरह की नौकरी चाहिए, वो शुरू में नहीं मिलेगी. You will always get back to that, and that's what happened as well. I started with an entry level job, accounting की, बल्कि वास्तव में मुझे realize भी नहीं हुआ था वो इतनी entry level job है. When I got it, I was like, I'll just get any job that I get. And when I started working, I realized कि यार ये तो जो क्योंकि उम्मन जॉब डिस्क्रिप्शन में तो बड़ी बड़ी बातें लिखी होती है ना, वो जब जॉब शुरू हुई तो मैंने रियलाइज किया कि यार ये तो बहुत ही अकाउंटिंग और मतलब ये वो जॉब है जो आज से मैंने 15 साल पहले शुरू की थी, जब मैंने ज्वाइन की थी कंपनी, उस तरह का काम है ये. बट अगेन माय ईगो वाज आउट ऑफ द विंडो. आई वाज वेरी हैप्पी कमिंग देयर. आई वाज Right, लाइक यहाँ मैंने अपनी जिंदगी बनानी है, आई हैव टू मेक इट बिग हियर right. and I will start with anything that is coming my way. So मैंने कोई नखरा नहीं दिखाया. Whatever job I got, I started. Great. In 6 months, I got another opportunity. I took that, and then I kept growing and moving up. Excellent. Quite a fascinating journey, and I can relate to that because, as you said, that once you move from one country to another, I made a similar move from Pakistan to UK, and I had to do the same. So you have to take a dip in your career, and you have to, as they say, learn, unlearn, and then relearn. So you have to unlearn what you learned before, and in the different country, you have to start over again. So amazing. So right now, how do you see the market in Canada? Is this a good time to move to Canada? And what is the job market like? So Canada में job market is tough, and the reason it is tough Okay. is because it is competitive. क्योंकि Right. कनाडा में जो immigrant आता है वो काफी Mhm. skilled होता है. Like they are highly Right. educated with good experience, strong experience. Mhm. So the world is very competitive in Canada. Right. So अगर तो कोई ये सोच कि है, इसलिए मैं I would just like to reiterate कि if you are coming with the mindset कि यार मेरी यहाँ डायरेक्टर लेवल जॉब है और मुझे डायरेक्टर लेवल जॉब ये ऐसी जॉब मिल जाएगी, वहाँ ऐसा नहीं होगा. You'll have Right. to really start from scratch. Right. Okay. Or the other reason for starting from scratch is one is competitiveness, but other challenge is कि जो न्यू कमर्स होते हैं उनको नौकरी में घुसना इसलिए मुश्किल होता है because there is something about Canada which goes like Canadian experience नहीं है. Right. So if you don't have Canadian experience, Mhm. they don't entertain your resume. Right.
तो उस पे खैर मेरे पास कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं. आई हैव सम वीडियोस ऑन माय चैनल वेयर आई टॉक अबाउट कि किस तरह यू कैन स्टिल पास इन योर रेज्यूमे इवन इफ यू डोंट हैव द कैनेडियन एक्सपीरियंस. सो Right. people can check that out. Great. But the idea is that is the one of the biggest challenge कि मेरे पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई आपके रेज्यूमे को घास नहीं डालता. Hmm. So that's why what you need to do is you need to keep your ego out and start anywhere. Just get some Canadian experience. The word Canada on your resume, Right. and once you have that, then it becomes easy. So a short answer to your question is, it is possible. In the long run it will be good, it will Okay. be very good, it's healthy. Right. But in the short term it is painful. Okay. So if you're ready to take the short term pain, long term may you'll be successful. Or long term se meri murad is not like 10 years, it's like 3 years. So if you're ready to take, yaar main 3 saal ka pain lene ke liye tayar hu, Right. after 3 years you'll be flying. Great. And what kind of professions are now in demand? So usually what happens, there are traditional jobs and traditional professions, but now there are skills and new opportunities coming up with the advent of now artificial intelligence is booming, and then there are others like Web 3.0 and others. So do you think that one has to keep their mind open and learn the skills of future so that they increase their employability, or do you think that they should stick to their own field? Acha, there I can go into two different tangents on this. Let me pick one, which is more industry related. Industry wise, Canada की industry is around government sector. Government sector बहुत big है because they have social security set up, medical free है, education free है. So the government is very big. So if you are able to get a government job, your life will be good. Like you will get pension for life, you'll get good benefits, everything is good. So that is one, but it is very difficult to get into the government sector. The second is oil, because it's an oil rich company. So अगर आप oil and gas में हैं, you'll find something good. Third is telecom. Telecom somehow is big. I don't know why, but telecom is also big in something like Pakistan as well, where telecom is pretty big. You'll find good opportunities in telecom. तो अगर आप telecom sector से आ रहे हैं, it will be very easy for you to get a job. And the last one is banking. Banking is globally big for them. Like they have banks which are global banks, like Puri, or वही फायदा होता है उनको because they're close to US, right? So they can tap into the US market. So they have banks which also do business with US market. So if you are in the banking, it should be also relatively easy for you to get it. So ये industry की बात हो गई. अच्छा, स्किल की बात है वो, इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू कनाडा. आई जस्ट शेयर माय पर्सपेक्टिव. मैंने इस पे स्कॉट एडम्स है जिसने वो डिल्बर्ट कार्टून जो है वो बनाता है, एंड ही टॉक्स अबाउट स्किल स्टैकिंग, एंड आई रियली लव दैट कॉन्सेप्ट, व्हिच इज के अगर मुझे फाइनेंस आती है तो मैं 100 ऐसे लोगों में हूं जिनको फाइनेंस आती है. पर अगर मुझे फाइनेंस भी आती है और मुझे अच्छी कम्युनिकेशन स्किल आती है तो मैं उन 100 में से 50 लोगों में हूं, ऐसा हो जाता हूं. सो आई बी पीपल हु नो फाइनेंस एंड हु नो गुड कम्युनिकेशन. थर्ड इज मुझे ई कॉमर्स भी आता है. मेरी अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट है और मैं लेगो में भी ई कॉमर्स में काम करता हूं. तो ऐसा बंदा जिसको फाइनेंस आती हो, अच्छी कम्युनिकेशन आती हो और ई कॉमर्स आता हो, वो फिर 25% हो जाते हैं 100 में से. इसी तरह अगर मैं उसमें एक एआई का एलिमेंट भी डाल दूं तो वो फिर 25 में से 5 हो जाएंगे. सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू स्किल स्टैक इन अ वे कि आप वो टॉप 1% में आ जाएं. और वो टॉप 1% में आने का तरीका ये है कि यू विल हैव टू फाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स ताकि यू कैन स्टैंड आउट एज समवन यूनिक. नाउ दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज स्पेसिफिक टू कनाडा, बट आई जस्ट वांटेड टू से दैट दिस इज काइंड ऑफ अ यूनिवर्सल थिंग इफ यू कैन ब्रिंग दिस अप. क्योंकि लोग अमूमन ये कोशिश करते हैं कि यार मैं स्पेशलाइज हो जाऊं. उसके अपने मेरिट्स हैं बाय द वे, ऐसा नहीं है कि मतलब यू कांट बी स्पेशलाइज्ड, उसके कोई मेरिट्स नहीं है. बट आई थिंक इन द लॉन्ग रन दैट स्पेशलाइजेशन थिंग इज काइंड ऑफ डाइंग आउट. You rather need to, and especially if you want to grow and develop, you need to have that skill stacking ताकि आप वो 100 में से एक वाहिद बंदे हो जिसको, एज आई रिपीट माई सेल्फ, फाइनेंस भी आती है, अकाउंटिंग भी आती है, कम्युनिकेशन भी आती है, ई कॉमर्स भी आती है, एआई भी अंडरस्टैंड करता है, एसएपी भी आता है, एंड मे बी सम अदर थिंग. सो यू जस्ट बिकम दैट वन इंडिविजुअल एंड सडनली यू आर इन डिमांड बिकॉज देयर इज नो वन लाइक यू. तो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि एक और चीज है वो, आई थिंक स्टीव जॉब्स ने कभी कहा था या किसने, एंड आई अप्लाइड फॉर माय यूट्यूब चैनल एज वेल, that I don't want to be better than others. I just want to be different. तो दो तरीके हैं सक्सेस होने के. या तो आप किसी से बेहतर हो जाए, आप बोले कि यार मैंने बस बेस्ट फाइनेंस का बंदा बनना है. अच्छा, बेस्ट फाइनेंस का बंदे बनने में आपको उन 100 लोगों से compete करना है. दूसरा एंगल क्या है तरीके ग्रो करने का, विच इज यू से कि मैं डिफरेंट हो जाता हूँ सबसे. तो मैं अपनी एक ऐसी लेन में भागूंगा जिसमें सिर्फ मैं ही भाग सकता हूँ और कोई भागेगा ही नहीं. And that's how you can succeed. So you'll be a winner in that lane because that lane is, you own that lane completely versus running in the lane जहां पहले 100 लोग और भाग रहे हैं.
तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि यू डू दैट स्किल स्टैकिंग, ताकि आप जो है वो अपने आप को यूनिक हो जाएं वर्सेस ट्राइंग टू बीट द कंपटीशन, यू जस्ट बिकम डिफरेंट. Excellent. Now that's amazing. I find this a very powerful insight about skill stacking that you just talked about. क्योंकि इसमें as you said कि आप employability भी बढ़ जाती है, your chances of success increase as well. But you get to have a lot of fun as well. You if you are of that mindset कि कुछ नई चीजें सीखना है, so do that as well. And secondly, जो आपने बात की है कि the friends in telecom and banking who are watching this, I think that'll be good news for them because usually people think in Pakistan and in the Middle East that telecom jobs are getting lesser and lesser. But I think if in Canada you have demand, so this is where a few of my friends are already in Canada in telecom, so I can relate to that. But thank you Nice. very much for that powerful insight. I think that's quite useful for our viewers as well. So moving on, Behrouz, tell me a little bit about the immigration process. Are you updated about Canadian immigration? Like when you did it, how was the process, and now what's the difference? And is it still easy, or is it relatively different now, or difficult now? To answer your question, when I applied through a federal skilled labor program, and it was an old program. जिससे मैंने बताया कि मैंने उसको I filled a document and I did it physically. Now they have a very different program, but in essence वही है उसका, which is there is a point system, which is they want people who have done masters. So education को value करते हैं. तो आपकी जितनी अच्छी education होगी, you'll get that points. So essentially you'll get points for different elements that you have. And then what they do is वो कहते हैं कि अब जिसके जो सब लोगों के दुनिया में से जितने लोगों ने अप्लाई किया उनके सबके पॉइंट्स को रैंक करते हैं और उसमें से टॉप लेट्स से 20, 300, 400 जितने भी उन्होंने लोग उठाने हैं वो उठा लेते हैं. सो आपने ये करना है कि आपने अपने पॉइंट्स ज्यादा से ज्यादा बनाने हैं. अच्छा, पॉइंट्स कैसे बनते हैं? पॉइंट्स बनते हैं एजुकेशन से. सो इफ यू हैव अ मास्टर्स डिग्री तो आपको उससे फायदा होगा. अच्छा, उसमें भी होता है कि हमारी जो डिग्रीज होती हैं पाकिस्तान की वो रिकैलिब्रेट होती हैं इन कनाडा. ये एक मैंने नई चीज सीखी और मैंने अपना एक पॉडकास्ट कल ही कर रहा था. मैं एक बंदे से हु वाज एक्सप्लेनिंग टू मी a different program of getting into Canada, which is provincial nominee program, which I didn't come through their program. उसकी भी मैं बात करूंगा. बट उसने एक बात ये की कि उसने जब पहली अपनी डिग्री सर्टिफाई कराई थी, it came out as bachelor's. So when you get a bachelor's degree, you get less points. But if you have a master's degree, you get more points. तो उसको जब बैचलर्स डिग्री हो गई तो उसके पॉइंट्स गिर गए. सो व्हाट ही डिड वाज ही वाज टोल्ड बाय द कंसल्टेंट कि यार ये पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन जो इंस्टीट्यूट है जो सर्टिफाई करता है इन कनाडा, ये हमेशा डिग्रीज को कम कर देता है. देयर इज अनदर इंस्टीट्यूट बिकॉज दे हैव लाइक मल्टीपल इंस्टीट्यूट जिनको आप अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं. वो जो है इट विल क्वालिफाई योर एजुकेशन एज मास्टर्स. So I'm forgetting the name of that particular institute, but on my channel I'll put it on. तो अगर आप उससे कराएंगे तो आपकी मास्टर्स हो जाएगी. So this is one tip I learned. Second is that you have to give your IELTS. और IELTS में because they want to make sure कि यार अगर आप एक इंग्लिश स्पीकिंग मुल्क में आ रहे हैं या फ्रेंच स्पीकिंग, क्योंकि उनका कुछ एरिया फ्रेंच भी बोलता है, तो आपको या फ्रेंच या अंग्रेजी आनी चाहिए. बिकॉज दे वांट टू मेक श्योर दैट यू कैन कम हियर एंड असिमिलेट. ऐसा ना हो आप आए और आप उनसे किसी से बात ही ना कर सकें. सो दे वांट टू मेक श्योर कि कोई ऐसा बंदा आ रहा हो जिसकी अंग्रेजी या फ्रेंच अच्छी हो. Third thing is if you have a relative there. If you have a relative, then you get extra points as well. Again, this is out of assimilation. They want to make sure कि अगर आप आए तो आपका वहाँ सोशल सर्कल हो, आप किसी को जानते हो, तो उसके लिए they give you points as well. इसी तरह डिफरेंट चीजों के छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं. आपका एक्सपीरियंस कितना है, वर्क एक्सपीरियंस कितना है, उसके आपको और पॉइंट्स मिलेंगे. अच्छा, फिर पॉइंट्स एज के हिसाब से कम होते जाते हैं बिकॉज उनको यंग लोग चाहिए, उनको टैक्स पेयर्स चाहिए, उनको चाहिए क्वालिफाइड लोग चाहिए. तो उनको ऐसा बंदा नहीं चाहिए हुज इन देयर 45. तो 45 का मतलब ये कि उसके पास एक 15 साल वर्किंग और होंगे, उसके बाद रिटायर हो जाएगा. So they don't want someone who comes, works for 15 years and then becomes a burden on their social security. So they want young people. So another advice that I give people is come as early as possible. दो वजह से, एक तो you'll get more points, but the second is you will be able to find job easily. मेरा जो कट ऑफ है ना, जो मैंने रियलाइज किया है from people I talk to, my friends, is 40. Coming after 40 is very difficult to get a job. 40 के नीचे आप फिर भी, अच्छा उसकी दो वजह difficult to get a job. एक तो ये कि 40 के साथ साथ आपकी ईगो जो है वो बहुत पुख्ता होती रहती है. After 40 आपका, जब 40 से below you're still hustling, you're still trying, you're work making ways. But जैसे आप 40 प्लस होते हैं तो वैसे वैसे आपकी ईगो और पुख्ता हो जाती है. It's very difficult for you to say कि यार मैं वहां CFO था, डायरेक्टर था, और अब मैं यहाँ अकाउंटिंग की जॉब ले लूं. मैं तो 45 years old हूँ, इस उम्र में तो मैं ये नहीं करूंगा. But I came when I was 33, so I was like, okay, ठीक है. I was a CFO at 33, good, but I can do any job at 33. I can still make my way up because I have power of time with me. So I highly recommend कि अगर आप जितनी जल्दी आए उतना अच्छा है.
ऑल्दो वन कैन आर्ग्यू कि थोड़ा सा बैलेंस पॉइंट्स, मेरे लिए जो बैलेंस था वो ये था कि गेट मेकिंग गुड इनकम इन दुबई एंड देन मूविंग टू कनाडा। सो मैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं यार मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा के फिर कनाडा आ जाऊं, और उसकी वजह ये क्योंकि कनाडा में टैक्सेशन हाई है, कनाडा में इनकम लेवल्स वो नहीं है जो आपको मिडिल ईस्ट में मिलते हैं। बट देन देर इज अ डिमिनिशिंग रिटर्न, देर विल कम अ टाइम व्हेन बेशक आपके पास पैसा ज्यादा हो बट आपकी एज इतनी कम हो गई है या इतनी बढ़ गई है, सॉरी, कि इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सेटल इन द मार्केट, गेट अ जॉब और इवन गेट गुड पॉइंट्स फॉर इमिग्रेशन। तो दिस इज वन। The second, which I was referring to, जो मेरी podcast हो रही थी अपने channel पे, which is PNP program. So in case you are not able to qualify for a federal skilled labor program, और ये जिस बंदे से मेरी podcast हो रही थी, he couldn't qualify because he didn't have any relatives in Canada, so उसको Canada की relatives के points नहीं मिल रहे थे, and I think there was, he had also a age challenge, so he was 40 and he had less points because of his age, so he went for a provincial program. Now Canada में जो main province हैं which are जहाँ लोग जाके रहना चाहते हैं वो है ओंटारियो, एंड देन इट्स द प्रोविंस ऑफ कैलगरी, एंड देन जो ब्रिटिश कोलंबिया इनका उधर है। अमूमन इधर इन तीन जगहों पे होते हैं, और ओंटारियो में इज लाइक 40-30% of entire Canada's population is in Ontario. So there are provinces जहाँ they want people to move but people don't come. तो उसके लिए उन्होंने ज़्यादा easy setup रखा है for immigration, easy scoring रखी है for you to be able to come and settle in those provinces because they want people to settle. उसका challenge ये है, especially हम जैसे देसी लोग के लिए, because we want to live with our own type, and which makes sense as well because हम उन्हीं के साथ पले बड़े हैं, वही लैंग्वेज बोलते हैं, वही म्यूजिक सुनते हैं, वही कल्चर है, वही रिलीजन एंड ऑल। और किसी ऐसे प्रोविंस में जाके रहना जहां आपको, वैसे देसी तो हर जगह ही मिल जाते हैं आपको फॉर दैट मैटर, बट इट इज स्टिल हार्ड टू सेटल इट इन अ प्लेस विच इज मोर रिमोट, वेदर थोड़ा टफ है, बट यू बट if that's the only way you can get immigration, people do it. आपको वहाँ 3 साल उस province में रहना पड़ेगा, and then after 3 years people make the move to their preferred province. Great. No, thanks a lot. That's quite useful. In terms of if somebody wants to move from Pakistan, how much funding do they need? I mean, in terms of your points, is there a basic starting points of somebody who is of the right age that is required to be there? How much should they have in their bank account? So, good question. एक तो Canada की requirement है, if I'm not mistaken, and this may have been updated as well. I think for a family of 4, you need $60,000 Canadian for you to before you land. Like जब आप land कर रहे हो वहाँ, तो आपके पास proof होना चाहिए कि आपके पास $60,000 हैं। ये तो requirement है उनकी। But in any case, my recommendation is you should always have 1 year worth of saving. कि आपका जितना भी expense होगा, आप उसके एक साल की saving करके आए, with the assumption कि आपको साल तक अगर नौकरी नहीं मिले, you can sustain on those savings. By the way, मैंने ऐसे किसी को देखा नहीं है जिसको 6 महीने से ज्यादा लगे हो, unless आपकी ईगो, अगर ईगो नहीं है तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर, rather 3 महीने में लोगों की on average लग जाती है, maximum लोग 6 महीने तक जाते हैं, but just double it, have savings for 1 year. इसमें मेरी एक वीडियो है where I talk about the expenses in Canada, living expenses. Although वो वीडियो मैंने साल पहले बनाई थी और उसके बाद inflation hit कर गई, so whatever you see in that video you can just increase it by 10% given the inflation. But on average I would say ये ऐसे हर किसी पे डिपेंड करता है, people's lifestyle and all. But a family of 4, if you want to maintain a good lifestyle, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, vacations ना करना, बस अच्छा घूमना फिरना, I would say good, easy, like luxury के हिसाब से रहना, कि अच्छी गाड़ी भी हो आपके पास, okay गाड़ी हो and all. I would say 5,000 Canadian dollars is an expense you should assume. तो लगा लें साल का वही $60,000 हो जाता है. So if you have like $60,000 Canadian in your bank, you should be good. Good. But another aspect is when this point based system, what's the criteria from their perspective? This is practical that you need to have this much $60,000. Is that the requirement as well of that point based system of immigration? हाँ, आपको आपको you have to show the funds. I don't know if it adds to the points, but there are some bare minimum criteria as well. तो कुछ तो हैं जो points है ना, कि अगर आपके पास है तो अच्छा है, नहीं है तो ठीक है. बट कुछ हैं कि ये तो होना ही होना है, मतलब ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है. सो फॉर इंस्टेंस, वन स्टार्टिंग पॉइंट इज हैविंग योर बैकग्राउंड चेक, मतलब अगर आपके ऊपर कोई पुलिस का केस है या देयर इज सम अदर इशू, देन यू and it comes in your police report, then obviously you can't go. So there are some bare minimums, and I think this having that minimum cash is also one of the bare minimums. Great. So, Behroz, talking about your journey, so you moved to Canada and you got settled over there.
Life was good. So why did you move this transition to move to US then? What happened? So the challenge with so before talking to, I love Canada. I love the people here. It's an amazing country. मैं जब land किया था, the way I was greeted, मेरा जब form उस police officer ने लिया and he said welcome home. I never felt it in Middle East, and you I like even in Pakistan you don't feel it because people are just so welcoming, so nice. यहाँ एक बंदा दरवाजा अगर गुजरता है ना, पीछे लोग आ रहे होते हैं तो वो खड़ा हो जाता है दरवाजा लेके, और लोग जाते रहते हैं और वो दरवाजा लेके खड़ा रहता है. इसी तरह यहाँ मैं एक और लोगों को एग्जांपल देता हूँ, which I think in Pakistan it would be disaster. There's something called stop all way. I don't know if यूरोप में ऐसा है कुछ stop all way, which यहाँ अगर आपकी 4 रोड्स क्रॉस कर रही हो तो उसमें एक साइन लगा होता है स्टॉप ऑल वे, विच मीन्स के जो भी उस चौराहे पे पहले आएगा वो पहले क्रॉस करेगा. सो हर एक को रुकना है. सो फॉर इंस्टेंस देयर इज अ कार कमिंग, इट विल स्टॉप हियर, एंड देयर इज अ कार कमिंग, ही विल स्टॉप एंड देन ही विल मूव फर्स्ट एंड देन ही विल मूव सेकंड. सो जो पहले आता है वो देख लेता है कि मैं पहले आया हूं, कौन आया है, एंड देन दे लेट दैट पर्सन मूव फर्स्ट. कोई सिग्नल नहीं है, कोई पुलिस वाला खड़ा नहीं होता, एंड दे जस्ट डू इट इन सीक्वेंस. यू पुट दिस, और मैं लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान में रख लें तो फिर आप इमेजिन कर लें कि उस चौक पे होगा क्या. दिस इज अनदर एग्जाम्पल. बट पीपल आर रियली अमेजिंग, रियली ओपन. यहाँ जब ईद की नमाज होती है तो मेयर जो है, द मेयर इज देयर टू गिव, अपना मेयर जो है, गोरा मेयर, क्रिश्चियन मेयर और मे बी एथियस्ट मेयर, वो आके एक छोटा सा खुतबा वो भी देता है फॉर द टू द कम्युनिटी. सो it's a very amazing society, very good. I really love it. मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरा अच्छा सर्कल है. Like Canada is home for me. I'll eventually retire in Canada. I'll settle here. Everything. The challenge is कि मैं बहुत ambitious हूँ. And most of us as Pakistanis are ambitious. और मैं लोगों को यहाँ गोरों को अमूमन यही समझाता हूँ कि उसकी एक वजह ये है कि हमारी सोशल सिक्योरिटी हमारे मुल्क में नहीं है. तो आज अगर मैं ग्रो करना, so growing is surviving. If I stop growing, I will kind of just expire. Because मेरे ऊपर मेरी फैमिली की, मैं अपनी फैमिली की सोशल इंश्योरेंस में हूँ, उनके पास कोई इंश्योरेंस थोड़ी है, उनके पास कुछ सोशल सिक्योरिटी थोड़ी है. तो मेरे माँ बाप का भी इन्हिसार मुझ पे है, सबका इन्हिसार मुझ पे ही है कि मैं ग्रो करता रहूं और मैं फैमिली को प्रोवाइड करता रहूं. सो हम टेक्निकली बड़े एम्बिशियस होते हैं, और मैं शायद थोड़ा और एम्बिशियस भी होऊंगा एक्स्ट्रा. सो कनाडा में ग्रो करना बिकॉज अपॉर्चुनिटीज बहुत नहीं है, और उसकी एक वजह ये है कि कनाडा जो कि नेगेटिव है कनाडा का बीइंग अटैच्ड टू यूएस, इसके मोस्ट ऑफ द हेड ऑफिसेज आर इन यूएस. तो लेट्स से जो सीनियर डायरेक्टर सीएफओ है वो यूएस में बैठा है कंपनी का, जो ग्लोबल कंपनीज हैं या नॉर्थ अमेरिकन कंपनीज हैं, और उसने एक छोटा एनालिस्ट बिठाया हुआ है कनाडा में, बिकॉज कनाडा इज लाइक 1/10 ऑफ यूएस इन साइज. So there is so much I can do to grow. So Lego में, for instance, I couldn't grow further in the company. So either I change the company or I move to US. और change भी अगर मैं करूंगा तो मेरे लेवल की, जिस लेवल पे मैं जाना चाहता हूँ, बहुत opportunities available नहीं थी. So this is one. Second is taxation is very high. So it's difficult to save a lot of money. Now the good thing is taxation is high because it pays for your kids' education, जो कि US में भी होती है, but more importantly it pays for the medical. But I'm young, so I really don't need the medical benefit till I'm old. So that's kind of a cost for me. Third is income levels are low. So US is like Dubai of Southeast Asia. लाइक टैक्स कम है और इनकम लेवल ज्यादा है. और अगर ये एक वजह भी है, अगर आप नोट करें जो लोग दुबई में रहते हैं, कि दे वोंट फाइंड अ लॉट ऑफ अमेरिकंस इन लिविंग इन दुबई एज अगेंस्ट यूरोपियंस. उसकी दो वजह है. एक तो ये कि आपको, अगर आप यूएस सिटीजन है, आपको यूएस में फिर भी टैक्स देना पड़ता है. तो वो कहते हैं यार अगर मिडिल ईस्ट जाके फिर टैक्स देना ही है तो क्या फायदा. बट वो टैक्स का इतना ज्यादा है नहीं. यूएस में टैक्स लाइक इज प्रीटी लो. बट उसकी दूसरी वजह ये है कि चूंकि यूएस में टैक्स लो है और इनकम ज्यादा है, तो बोलते हैं यार हम यहाँ से मूव करें वहां जस्ट फॉर अनदर 10-20% रेज, इतना कोई फायदा नहीं है. वी रादर जस्ट स्टे इन यूएस एंड एंजॉय more liberal life, which they find it more liberal in US, which for some matter it is as well. Plus, also kind of on the same level of income with low taxation. Great. And I think some people use it as a plan as well, plan of action. They want to move to US, but they take Canada as an intermediate step. Did you have this plan from the start, or you made it up as you went along and you had an option, then you jumped on it? So मेरा ये प्लान नहीं था, कुछ लोगों का होता है, but I can also say, so मेरा प्लान हमेशा ये था कि I need to grow, I need to earn a good living, whatever it takes. प्लान में ये नहीं था कि मैं मिडिल ईस्ट वापस आऊंगा. That was out of the question. So US was one big option to move. But एक चीज मैं और ये कहना चाहूंगा कि
once you've lived in some place for 3 years, क्योंकि कनाडा में आपको 3 साल रहना है फॉर योर सिटीजनशिप, और 3 साल अमूमन 4 साल हो जाते हैं, और मुझे 5 साल हो गए थे बिकॉज पासपोर्ट आते आते टाइम लगता है, कोविड आ गया था, उसमें एप्लीकेशन में टाइम लग गया, सो पासपोर्ट आते आते मुझे 4.5 5 साल लग गए. Once you've lived in a place for 5 years, it's not easy to just say कि अब मैं यहाँ से फिर move करता हूँ. And when I was young, it was easy for me to move from Quetta to Karachi, Karachi to Dubai. I was young, kids were young, कुछ school वगैरह जा नहीं रहे थे, so it was pretty easy. But now it becomes harder and harder. So कहना बड़ा आसान होता है. बहुत से लोग ऐसे आते हैं, बोलते हैं यार बस यहाँ से पासपोर्ट पकड़ेंगे और फिर हम चले जाएंगे वापस मिडिल ईस्ट, या हम फिर वापस जो है वो कुछ रिलीजियस पर्पजेस की वजह से चले जाते हैं, कुछ मोर इनकम की वजह से, कुछ लोगों को अपने पाकिस्तान के करीब रहना है, कुछ लोगों को दफन पाकिस्तान में होना है, स्टफ लाइक दैट, सो जस्ट दे जस्ट वांट अ पासपोर्ट एंड वांट टू लीव. आई वाजंट वन ऑफ देम. बट आसान नहीं है, ये कहना बहुत आसान होता है. वंस यू लिव्ड इन 3 years इन अ प्लेस, आप अपनी जॉब बना ली है, आपके बच्चे स्कूल जाने लग गए, दोस्त बना लिए, सोशल सर्कल बना लिया, और फिर आप बोले अच्छा यार मैं 4 5 साल बाद फिर मूव करूंगा again back to some new place. It's very difficult. Now for me it was still easy to make the transition because it's still North America. बच्चों को स्कूलिंग में भी फर्क नहीं समझ ज्यादा डिफरेंस लगा, बट इमेजिन इफ आई वुड हैव मूव टू दुबई ऑल टुगेदर, उनको अगेन उनके लिए बहुत बड़ा चेंज होता. सो या. So when you became Canadian, then it's easy. Was it easy for you to get a job in US? And secondly, do you need a work permit to work in US, or once you are a Canadian citizen, you can live there as long as you want in US, and you can have? How does it work? Yeah, so I think the way I said it initially sounded very easy, but it's not easy still. Can US में वर्क वीजा लेना इज लाइक द सेम सेटअप चाहे किसी और मुल्क के लिए लेना हो. लगता आसान है कि हम बॉर्डर्ड हैं यूएस से, तो वर्क वीजा आसान होगा. इट्स नॉट दैट इजी. However, the good thing is that when you are in Canada, you can work for US based companies. Just मैं एक ऐसी कंपनी के लिए काम करता हूँ जो कि ग्लोबल है, लेगो. एंड देयर आर अदर सो मेनी कंपनीज इन कनाडा जिनका कोई ना कोई ऑफिस होता है यूएस में. So it is very easy to get a transfer from this office to US, and then you get a work visa. Now the work visa that you get are different kind of work visas. The best one which I have is called L1. L1 work visa वो होता है कि जिस पे अगर आप आए, आप it's called a dual intent visa, which is as soon as you come to Canada, as soon as you come from Canada to US, you can apply for your green card. And as soon as you get your green card, you can just move any job, change any jobs as you want. So for instance, the visa I have now, I cannot leave Lego. I can only work with Lego. So कल अगर मुझे Lego खुदा ना खासा fire कर दे, I don't have a job in US. It's kind of same thing as Dubai. I'll have to move back to Canada. But the good thing is when you come on L1, it takes 7 8 months to get green card, or maybe a year depending on कि कितना backlog वगैरह चल रहा है. So it will be easy. Just the H1B एक और famous visa है, but it's very difficult to convert that into green card. Takes a long number of years. और उसमें भी यही चैलेंज है कि जिस कंपनी ने आपको स्पॉन्सर किया हुआ है, आप उसी कंपनी के साथ हैं. जिस तरह जब टेक कंपनीज ने, स्पेशली ट्विटर वगैरह ने, जब बहुत सारे टेक लोग फायर किए थे which were from India and Pakistan, they had H1Bs, and as soon as they got fired, if they don't find a job in the next 6 months, they have to leave US. तो उसके दो चैलेंजेस, एक तो आपके पास जॉब नहीं है, दूसरा आपको जॉब ढूंढनी है, और ढूंढनी भी उस कंपनी में जो आपको वीजा स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हो. तो स्पॉन्सर कर सकती हैं कंपनियां, बट यू हैव टू रियली फाइंड दैट बिग कंपनी हु इज रेडी टू स्पॉन्सर यू एंड पुट दैट मनी एंड एफर्ट बिहाइंड यू. So it's kind of not fun from that angle. But the easy piece from Canada is you're close. You can get an L1. You can move and make the transfer in the same company you're working for, and hence it's relatively easier, but it's not a piece of cake. Okay, good stuff. And where are you based currently? Which state are you in? So I'm in Massachusetts, जहाँ का main city Boston है, but मैं Boston में नहीं हूँ. Boston is on the east end of Massachusetts. I'm on the west end. So I'm like 2 hours drive from Boston, 3 hours drive from New York. So pretty centrally located. जब दोस्त वगैरह आ रहे होते हैं न्यूयॉर्क या बॉस्टन कहीं भी, तो it's very easy for me to kind of meet them, connect them. So आप कभी चक्कर लगे न्यूयॉर्क, throw me a message, and we can always connect in the New York City. I think that's amazing because that's what happened with Bali as well. That we started talking to each other, and it took us like 2 weeks after our podcast. I was in Dubai, and we were meeting in person. So you never know. I mean, our Nice. road might Nice. cross. Yeah. Our paths might cross sooner than later, because I have Exactly. my business partner lives in New Jersey. So I have a plan to come there end of September, hopefully. So I'm looking forward to see you then, hopefully. My That would be great. So, Behrouz, I would also like to ask you. I'm getting quite excited now because now we are at Lego. So we have arrived at that part where. So
I observed that the innovation, the level of innovation Lego brought for kids, and especially when the kids engage with Lego, they become better in terms of creativity. Secondly, what we do in Zico 5, we conduct experiential workshops for organizations, and we do agile training, coaching, consulting for them. But the workshops, we bring the executives together, and they build cities out of Lego, and then we impart the key Nice. concept of agile and other key principles to reinforce their learnings. So my question to you is this: that Lego, how did they come up with this beautiful idea? That how did they start? Do you? I mean, I'm sure that you would know more than me. So please enlighten me about that. So it's a Danish company. It's a privately owned company. It's owned by a family. They don't have debt at all. They don't have any equity from outside. Totally privately owned. The company total size would be somewhere around 10 to 11 billion dollars. It's one of the biggest toy companies in the world. After COVID, it became one of the biggest toy companies. It started with this guy in Denmark who was making a duck out of wood. So लकड़ी से कुछ खिलौने बनाता था, उसमें duck पहले उसने खिलौना बनाया था, फिर उसने कुछ trucks वगैरह बनाए. And then he kept making वो लकड़ी के toys. And then there is this company came to him and said कि हम ये plastic का एक नया हमारे पास कोई चीज आई है जिसपे हम ये बना सकते हैं bricks. And they just gave the contract to them, and that's where kind of Lego started. Now the beauty is Lego का जो brick है, आज से अगर आपने मेरे ख्याल से कंपनी को 60 years हो गए, 60 साल पहले जो आपने लेगो का ब्रिक लिया है और आज जो ब्रिक है ना, उन दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे तो फिट हो जाएगा. सो विच इज द मैजिक ऑफ द सिस्टम. तो उन्होंने एक सिस्टम बना दिया है जिसमें यू कंटिन्यू टू बाय इनटू द सिस्टम ऑफ लेगो. So that is one thing. The second thing is there is also a lot of fan following. People are really crazy about Lego. Like even मतलब अगर वो Lego में नहीं भी हैं, but वो viral exactly वो viral करते हैं. So for instance, डेविड बैकम जब कोविड में था तो वो लेगो बना के उसने अपनी इंस्टाग्राम पे तस्वीर डाल दी कि मैं अपने बच्चे के साथ लेगो बना रहा हूँ. और जिस दिन उसने तस्वीर डाली उसके अगले दिन जो है वो लेगो की सेल्स बढ़ गई फॉर दैट पर्टिकुलर सेट. And this happens a lot. So there is so much virality that comes along with Lego. That's amazing. I think इनको एक और फायदा बीच में हुआ था through Star Wars. When they took over the Star Wars IP, there is huge craze for. मैंने by the way Star Wars मेरे बेटा बहुत शौक से देखता है. I've watched a few episodes here and there with him, but that's it. But there is a huge craze in North America and Europe for Star Wars. So when they moved into Star Wars, it just blew up there as well. Or COVID may it just became like a thing where kids were at home, not going to school, so people were just buying. Even adults were home. So it's by the way, it's not a kid's toy anymore. It's for adults as well. लोगों को समझ नहीं आती ये चीज. स्पेशली पाकिस्तानियों को अगर आप बोलें किसी बड़े को अगर आप लेगो सेट देते हैं उनको समझ नहीं आती क्या है. बट यहाँ एडल्ट्स खेलते हैं. मतलब मैं भी अपने बच्चों के साथ खेलता हूँ. कभी कभी मैं भी when I have to, because मेरे पास कुछ free sets भी मिल जाते हैं. When I have to just take a break, I just sit and open a set and I just make it for myself. So it's not a kid's toy, it's an adult's toy as well. और एक और चीज ये भी है कि मुझे याद है जब मैंने कंपनी ज्वाइन की थी तो मैं अपने जीएम के पास गया और उसको मैंने कहा यार कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, कुछ देखते हैं कंपटीशन क्या कर रहा है और हाउ वी कैन बीट द कंपटीशन. उसने बोला वी वांट कंपटीशन टू थ्राइव. एंड द रीजन वी वांट कंपटीशन टू थ्राइव इज क्योंकि कोई भी बच्चा जो है वो दुकान में, अमूमन बच्चे दुकान में लेगो लेने नहीं आते. वो आते हैं यार वो हमको प्लशी टॉय चाहिए, वो हमको पूप चाहिए, पता नहीं 10,000 किस्म के जो गंदे टॉयज नहीं होते जो एज अ पेरेंट यू डोंट वांट टू बाय फॉर योर किड्स. But when you enter the store and your kid wants to buy that shitty toy, आप बोलते हैं अच्छा ये तो मैं दिलाऊंगा बट साथ एक लेगो भी ले लो, बिकॉज आपको लगता है कि यार इससे कुछ सीख लेगा. इससे कुछ सीखेगा नहीं, ये तो 2 दिन बाद कचरे में होगा और ये बुरी चीज है. सो दिस when competition does well, there are people who go in the store, and when they go in the store, their parents want them to buy Lego. So that's another good thing. I was like, yeah be it's pretty well. That's amazing insight, because that's my behavior, because I really want my kids to learn more and innovate, and that's exactly Yeah. what I do. My son, when he was a bit younger, he used to go and buy a car, and I was like, come on, let's buy some Lego as well. So I Exactly. think now I learned this is a very beautiful, just quite a powerful strategy from Lego. And I remember from Legoland, we visited, I think last summer we were in UK and we visited Legoland, and I was mind blown by the quality of construction. All structures, everywhere you've got the जितने भी ये दुनिया के best buildings हैं, they have assembled them all together and given an experience of the whole world. But amazing Exactly. चीजें. That was Exactly. quite an incredible experience. Then you go to New York, you go to London, everywhere their flagship, their stores are at the heart of the city,
एंड देन वो जो अमेजिंग किस्म की बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें नॉटर डैम है या ईफल टावर है या ये बिग बैन है, दैट्स अमेजिंग। आई मीन वो यू आर वेरी राइट कि वो जो बड़े वाले हैं ना वो फिर ये बच्चों के लिए नहीं है, वो बड़ों के लिए हैं। सो एज दे ग्रो Exactly. अप they have Exactly. memories as well, and they're cherished for all the time. So amazing, guys. So Behrouz, moving on, I think we have now, I'm sorry, you have packed schedule, so I won't take a lot of your time. I think we'll have to do another one soon, inshallah. So my next question is, how did you stumble upon this podcasting and the journey of your content creation? Let's talk about that now. So yeah, that's a good question. I always had this streak on trying to do something on this side, and that streak kind of grew when I came to Canada. क्योंकि मैं कनाडा के realize किया था, उससे पहले जिस तरह मैंने बताया मेरा career was all owned by PNG, so I was pretty mindless in terms of career. But I realized after leaving that job कि यार मैं हर बारी मुझे इस तरह की कंपनी नहीं मिलेगी जो कि मुझे मैनेज करती रहे, और ऐसी कंपनी भी फॉरएवर नहीं होती. मतलब दे लुक गुड, दे आर गुड, बट sometimes your career will end, sometimes the company will just end or maybe change. So I was like, okay, what I need to do is I need to start planning for my financial freedom. एंड फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब मेरे लिए रिटायरमेंट नहीं है. इसका ये मतलब नहीं है कि आप काम करना छोड़ दें. इसका ये मतलब है कि यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, वेन एवर यू वॉन्ट, विद हुएवर यू वॉन्ट. और मैंने ये रियलाइज किया था मेरे पास ये ऑप्शन है ही नहीं. और स्पेशली जब मैं कनाडा मूव हुआ एंड आई हैड टू फाइंड अ जॉब एंड स्टार्ट ओवर फ्रॉम स्क्रैच, आई वाज लाइक आई नीड टू क्रिएट दिस ऑप्शन फॉर माई सेल्फ. तो उसके लिए इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू रियलाइज कि यार मैंने कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है. सो आई स्टार्ट वर्किंग ऑन माई फाइनेंशियल्स. आई कवर दैट इन माई यूट्यूब चैनल एज वेल, that how I will reach financial freedom. And I did a math and I did some working. I realized that by the age I reach 45, I can be financially free. मैंने कहा good, ठीक है, money wise I can make it work. But then my question was, अच्छा अब उसके बाद मैं करूँगा क्या? And because I was such a 9 to 5 guy, I didn't know anything better. I didn't know anything else. मेरी कोई hobbies नहीं थी ज़्यादा. And that's why I said, okay, I need to develop a purpose as well after 45. So why I started this, creating this or starting the YouTube channel, was not because to make money. Money wise, I think I'll, if nothing, खुदा ना खास्ता कुछ major hiccup नहीं हो in terms of health, in terms of my assessment or the markets or anything, I should be good by 45. I should be financially free. But I wanted to have a purpose, and this is something that I wanted to start, and I started so that once I retire, I know that I have a purpose on hand as well. अच्छा, इसमें अब यूट्यूब ही क्यों शुरू किया मैंने? उसकी वजह ये कि मैं लोगों को ये कहता हूँ कि यार समथिंग, थिंक ऑफ थिंग्स, जिसके लिए कोई आपका दोस्त आपको कॉल कर रहा है और बोले यार वो मैं गाड़ी खरीदना चाह रहा हूँ, मुझे बताओ मैं कौन सी लूँ, या वो मैं ये खास चीज खरीदना चाह रहा हूँ, या मैंने अपना गार्डन ठीक करना है. अगर आपको इस तरह की कॉल आ रही है ना, इसका मतलब ये है कि आपको वो चीज पता है, एंड देयर इज समवन इन द वर्ल्ड जिसको ये चीज नहीं पता है. तो अगर एक है जिसको नहीं पता है, इस तरह और भी होंगे जिनको नहीं पता होगा, और आपको वो चीज पता है. सो आप वो किसी को सिखा सकते हैं, एंड यू कैन मेक अ लिविंग आउट ऑफ दैट. और मुझे एक दोस्त ने कॉल की एंड शी सेड शी वांटेड टू नो हाउ टू गेट अ जॉब इन कनाडा. और उसको मैंने वॉइस मैसेज रिप्लाई किया, एंड इट वाज लाइक 10 मिनट लॉन्ग वॉइस मैसेज. और बल्कि जब मैंने उसको कर दिया उसके बाद मैंने उसको लिखा, क्योंकि आई वेंट थ्रू स्टेप बाय स्टेप कि ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ये करना है. And she replied saying, she's like, this was amazing. This is so comprehensive message, and thank you, amazing. This was so detailed. It really helped me. I was like, यार ये रिकॉर्ड तो हुआ है, यही अगर YouTube पे करके और मैं बहुत सारे और लोगों की इसी तरह मदद कर लूं, that would be good. So something that comes easy to you, but it is hard for others. Something your friends call you for and say कि यार ये बताओ कैसे करना है, इसका मतलब किसी को और पता करना है, there is a demand for it and you know it, how to do it. I was like, okay, I'll start my YouTube channel. And that's how I started. मेरी पहली video was how to get a job in Canada. Now I started doing different videos as well. I tried doing some Kindle. मैं बहुत use करता हूँ. मैंने कुछ Kindle पे video बनाई, मैंने productivity पे भी videos बनाई हैं. But my core is around financial freedom and around career success on my channel. And I realized उसमें ज़्यादा मुझे traction भी मिली, and that's how I kind of started. And I'm really enjoying it because I get to meet people like you. I get to learn more now. I enjoy people tell about, लोग अपनी stories बताते हैं. It's so amazing to know about them. And it's so amazing to help people. Just a message when they send saying कि यार वो आपकी मैंने वीडियो देखी थी, you talked about something, it really helped me because I used it, and you go like, wow, this is really impactful. Versus यही कि वो डेबिट और क्रेडिट करते हैं अपने ऑफिस में, which has its own value because that pays the bill. But at the end of the day, I wanted to do something when I'm financially free, which really I enjoy and has a purpose. Excellent. I think that resonates very well with me because मेरा इसी तरह का मकसद था when I started my content journey, and it is quite empowering and quite amazing how we use it as a tool to bring positive change.
और इसमें एक दूसरे के साथ मिलना, कोलैबोरेट करना. और आई थिंक इट्स क्वाइट फैसिनेटिंग हाउ द मीडिया, सोशल मीडिया इज चेंजिंग लाइव्स. एंड ऑल्सो एज यू मैंशन के यूट्यूब के थ्रू आप वो बातें लोगों को बता सकें which people don't know, and then they are trusting you as an influencer to help them get through that, and basically Exactly. making meaningful content. So I really appreciate that, and I think you're doing a great job there. And I would post your channel's link as well in the Thank description you. so that people can follow and learn from it. So Behrouz, thank you very much for today's very. I really enjoyed our conversation. Amazing, and thank you so much for your time. So I'm looking forward to have more conversations with you going forward. All the best with your content journey as well, and I'm looking forward to see you when I visit US next time, inshallah. So stay well. Thank you Thank very you, much. Ali. So, Thank you. so viewers, if you haven't subscribed to our channel, so please do so, because you see that we're bringing up such a beautiful and such amazing, meaningful content for you. And I hope you will learn through this video, and I'll share all the content details for Bahroz as well in this video. Thank you very much. Keep enjoying and give us a thumbs up. Thank you. Bye.